हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग ऑल। सब बढ़िया? सबका हालचाल? लाइफ चल रही है? बढ़िया से चल रही है, पता ही था। ऑल गुड। चलो, that's really great. So let me just check who all are present. मैं तो एकदम बिंदास निशांत, फर्स्ट क्लास एकदम, हमेशा की तरह। I'm absolutely fine, कांची। Thank you. All right. So, is there any question that you want to ask? बाकी सबका पूरा दिन कैसा गया? How was your day? कैसा गया पूरा दिन? क्या क्या किए? कुछ स्पेशल हुआ आज के दिन में? It was nice. बहुत मस्त गया। ऐसा क्या किए? कौन सा थीम मारा उज्ज्वल आपने? नहीं सर, इकोनॉमी आज स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज कर रहा था। अच्छा, तो समझ में आया? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन थोड़ा पूछना था सर। हाँ, तो पूछ सकते हो एक दो क्वेश्चन, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग के पास मेरा ईमेल आईडी किस लिए दिया गया है? आंसर्स भेजने के लिए। सिर्फ आंसर भेजने के लिए? क्वेरी नहीं पूछ सकते उस पे? कहीं पे लिखा है कि नो, यू कैन नॉट, स्टैट्यूटरी वार्निंग, यू कैन नॉट सेंड क्वेरी देयर? वैसे पूछने में स्वैग नहीं है, लाइव इंटरेक्ट पूछने में जो स्वैग है वो। अच्छा, तो पूरा स्वैग से मजे लेना चाहते हो? हाँ, स्वैग पूरा चाहते हो। चलो ठीक है, पूछिए क्वेश्चन, दिखाइए अपना स्वैग। पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब दो पहले सबको। कल मैंने तुम लोग को कोई टारगेट दिया था, आई गिव यू सम टारगेट। व्हाट अबाउट दोस टारगेट्स? हैव यू फुलफिल्ड और नॉट? have you yeah, that was the thing. So have you gone through the previous 15 prelims question? ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे लग रहे थे कि वो सारे प्लानिंग के हैं कि इससे क्या होता है, उससे उसका मोटिव क्या था। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जितना पढ़ा था उतना सॉल्व हो जा रहा है। एक तो क्वेश्चन कि प्लानिंग कमीशन के जगह नीति आयोग को किसकी जगह पे लाया गया करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये तो बहुत इजी लगा, 4-5 क्वेश्चन था ही। देन 18 में मिले मिहिर आपको। ओके, सो गुड इवनिंग क्षितिज। सो सॉल्व हो रहे थे मिहिर आपको क्वेश्चंस? 18 क्वेश्चन जो मिले उनमें से, and see whatever thing that we have covered till now I think we have only covered the accounting of national income and the planning process in India. These are the only two things that we have covered till now, right? सर उसमें लेबर कमेटी वगैरह ये सब, इलेक्ट्रिक जनरेशन किसका कितना ज्यादा होता है, तो ये सब बन रहे थे। हाँ सर, वो तो बहुत कॉमन था कि इलेक्ट्रिक का ही सबसे ज्यादा 4-6 क्वेश्चन ही था, बाकी सब हम लोग का कम होता है, इलेक्ट्रिक का 10 होता है। चलो, सो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बन रहे थे क्वेश्चंस तो, है ना? that's really great. And Ishita is not available, I think. Anshika is coming. All right, so yes, उज्जवल क्या थे आपको क्वेश्चन? यस अंशिका, हैव यू गॉट द रिप्लाई? आपको रिप्लाई मिल गया आपका आंसर शीट का? एनएनपी के बारे में बताइए थोड़ा। क्या? एनडीपी और एनएनपी के बारे में एक बार बताइए ना, क्या होता है? एनडीपी और एनएनपी क्या होता है आपका? नेट नेशनल प्रोडक्ट। यस सर। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो पूछ रहा हूँ। वो तो मेरे को भी पता है कि एनएनपी बताता हूँ। ये हो गया आपका एनडीपी, ये इसको हम क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम एनडीपी के बारे में जानते हैं। ओके, नाउ सी हियर देयर इज वन वर्ड दैट इज नेट। अब जब आप व्हेन यू कैलकुलेट द ग्रॉस, when you calculate the total income, suppose करो आपकी earning है 1 लाख रुपीस per month, for example उज्जवल। okay, yes, your earning is for example 1 lakh per month, alright? then क्या बोले? बहुत कम है सर। तो फिर आईएएस क्यों बन रहे हो? आईएएस में भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, फिर तो आपको 55,000 रुपीज ही मिलेंगे। रिश्वत लेने के लिए? रिश्वत लेने के लिए आईएएस बन रहे हो? नो सर। जानते हो आप लोग की वीडियो रिकॉर्ड भी होती है,
और आपका जो ये स्टेटमेंट है इन फ्यूचर आपके अगेंस्ट में यूज भी किया जा सकता है ना। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग एन स्टेटमेंट। अगर मान लो बन गए गलती से आईएएस, है ना, और रिश्वत लेने लग गया, तो ये स्टेटमेंट कोई भी यूज कर सकता है बेटा, ठीक है। इसके लिए बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स व्हाटएवर थिंग दैट यू विल से विल बी रिकॉर्डेड हियर। रिकॉर्ड ऑलरेडी होता है तो ना, आप सबके सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड हो चुके होंगे। ओके चलो, तो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर मंथ आपका है, ठीक, सैलरी। अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल, और आपका कोई और इनकम नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रॉस, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस। लेकिन अब आपका जो टोटल जो सैलरी है, इसमें से जो टोटल सैलरी जो 1 लाख पर मंथ आता है, वो तो आपका ग्रॉस सैलरी हो गया। लेकिन गवर्नमेंट आपको प्रॉपर 1 लाख सैलरी तो नहीं देगी ना। गवर्नमेंट आपका क्या करती है, गवर्नमेंट इसमें से काटेगी आपका इनकम टैक्स, ठीक, गवर्नमेंट आपका काटेगी पीएफ, ठीक, गवर्नमेंट आपके काटेगी अदर बेनिफिट्स और जो अलाउंसेस है ना, उससे पैसे काट करके उसके बाद आपकी सैलरी तो 1 लाख है। Okay, that is the salary that the government is supposed to pay you on a monthly basis. लेकिन गवर्नमेंट उतना देती है क्या, नहीं देती है ना। वो तो हो गया ग्रॉस सैलरी। लेकिन इसमें से इनकम टैक्स, पीएफ, अदर चीजें डिडक्ट करके आफ्टर द डिडक्शंस यू विल गेट द सैलरी अराउंड 90,000 फॉर एग्जांपल, है ना। आफ्टर दोज डिडक्शंस यू विल गेट द 90,000। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये आपको 90,000 मिलेगा। सो दिस पर्टिकुलर विल बी कॉल्ड एज नेट, है ना। तो ये 1 लाख रुपीज is called as the this is what we call gross, that is total, right? And what is the net? The amount that you have received after all those deductions, उसको हमने क्या बोला, that is what we call net. ये क्लियर हुआ ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस? Yes, sir. So this is what you call, this is what is your NNP and NDP, ठीक है। यही है आपका एनएनपी और आपका एनडीपी। तो एनडीपी आपका क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेयर इन योर डोमेस्टिक कंट्री, वेयर in NDP what you try to do here, you try to understand what are the net gain of a country, net income that has been earned by a country. That is what we call net domestic country, not net domestic product. And in the NNP, what is the net income that has been earned by the Indian national? This is what we call net national product. All right. Yes, so that's why there you subtract the depreciation. This is the reason that the depreciation is subtracted there. All right, उज्जवल, अब जाकर के हुआ क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? चलो और बताओ। Deductions in GDP ना, there is no deduction as such ना। वहां पे तो आप ग्रॉस इनकम, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो देयर इज नो डिडक्शन एज सच। वहां पे हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। द डेप्रिसिएशंस आर नॉट एट ऑल सब्ट्रैक्टेड। ऑलराइट मिहिर सर, एनडीसी को ही ना राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यस सर। यार हिंदी मेरी थोड़ी सी स्लो है ना, तो वो तो नहीं पता मुझे। हाँ बोलते होंगे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सॉरी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। डेवलपमेंट मतलब विकास, काउंसिल मतलब परिषद। हाँ ऑब्वियसली होगा, आप ही ने बताया था सर, तो मैं ही भूल गया, जाओ, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद ये मैंने तो नहीं बताया होगा पक्का से, है ना। मुझे अपने हिंदी पे प्राउड है। नहीं सर, मैंने एक बार आपका लेक्चर देख के नोट्स लिखा था, तो उसमें आपने बोला था कि इसको राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं। चलो ठीक है। हाँ तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही हुआ, बुझे? यस। चलो और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट? सर एक बार जीडीपी बता दो। यस, हु इज स्पीकिंग? बताओ कौन बोल रहे हो? सर एक बार जीडीपी वर्सेस जीएनपी बता दो। जीडीपी एंड जीएनपी, चलो ठीक है। देखो तो इसके लिए तो बनाना पड़ेगा इंडिया का मैप, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा भारत महान, ठीक। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इंडिया। तो अब देखो
इंडिया के अंदर, ये हो गया इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री. सो वट एवर थिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, this is what we call the GDP in an economic year. Whatever new and final goods and services that is being produced within this particular territorial boundary of a country in an economic year, that is from 1st April to 31st March. Okay, so yes, so whatever new and final goods and services that is being produced in this particular territorial boundary in this particular time period in this particular year. Okay, this is what we call the GDP. Now answer me one thing, in this territory, in the territorial boundary of India, only Indians resides? No, sir. Then Foreigners are also. Absolutely, foreigners do reside. So will you calculate, so in the GDP, will you calculate the contribution of the foreigners in a country? Yes, absolutely correct. The foreigners, no Vidya, why no? Obviously in the GDP, see, GDP means what? GDP does not care about who are going to produce. That is not the business, that is not the concern of the GDP. In the GDP, it is about how much amount of good, new and final goods and services that are being produced. This is what we call GDP. So that's why it has a geographical concept. Right, GDP has a geographical concept because within the territorial boundary of a country, how much amount of goods and services are being produced, that is the concern of GDP. However, in GNP, in the gross national product, there we try to understand how much amount of goods and services has been produced by the Indians. Okay, how much amount Indians have produced, that is the concern of gross national product. All right, and now answer me one thing, do India resides only in India? क्या Indians सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहते हैं? All over world. Indians जिस तरीके से हमारे Indians जो है पूरी दुनिया में रहते हैं, they are similarly like we Bihari, we are spreaded the length and breadth of this country, not only this country but in other countries as well, right? So it's we who are truly maintaining the concept of diversity. है ना? So the thing is what, that GNP is about how much amount of goods and services that has been produced, okay, by Indians. So this is the fundamental difference between the GDP and the GNP. GDP always talks about where it has been produced. It is not about who has produced, but rather where it has been produced. So it is produced within the territorial boundary of India. If you talk about the GDP of India, then okay, GNP is about who has produced, whether Indians or the foreigners. So that's why in the formula of GNP, the income earned or the contribution of the foreigners are excluded. Do you remember the formulas or not? Yes, sir. Yeah, na? So in the formula of GNP, that is excluded. So now which is better? GNP is better or the GDP is better? Sir, Calculation of Nishank is saying GNP is better. Why Nishank? GDP better. Because तो नेशन के बारे में बता दिया ना कि how much Indians are producing. अच्छा एक बात बताओ, इंडियंस कोई यूएस में चले गए, है ना? Are they able to generate employment in India and for Indians? सर remittances तो दे सकते हैं ना? चलो ठीक है, रेमिटांस आपने भेजा, अकेले भेजा जाकर के, लेकिन आपने कंपनी खोली जिसमें आपने 1000 लोगों को एम्प्लॉय किया, तो वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बेहतर होगा या फिर रेमिटांस ज्यादा बेहतर होगा? सर ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बेहतर होगा. एम्प्लॉयमेंट किस में जनरेट होगा, जीडीपी में या जीएनपी में? जीडीपी में. तो फिर कौन सा बेहतर हुआ? जीडीपी. एब्सोल्युटली, है ना? सो दिस इज द थिंग. Now see, there is nothing as such कि GNP ही बेहतर है या फिर GDP ही बेहतर है, but it is always good to have a GDP. Why? GDP should be higher than, because it shows that the real economic activity takes place within the territorial boundary of a country. It means that more employment generation would take place and that is more beneficial. कोई हमारे देश में कुछ भी करके इंडिया से बाहर चले जाएं तो उतना ज्यादा तो बेनिफिट है ही नहीं ना. सुंदर पिचई कितना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं. सुंदर पिचई से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया में ओप्पो और वीवो का है, even though Sundar Pichai is the CEO.
All right. Yes, I'll explain that to you. Provident fund. Okay. So यहाँ तक clear है? निशांक, आपका question clear हो गया? Yes sir. चलो. Was that your question? प्रोविडेंट फंड होता है वो तो सैलरी का एक पार्ट होता है ना, जो डिपॉजिट होता रहता है, जो रिटायरमेंट के टाइम उसका काम आता है। हाँ हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही होता है। See, what is provident fund? देखो, once you will be selected as an IAS officer, all right, you will receive the salary, right? You will keep receiving the salary on every month, on a monthly basis. But once you will attain the age of 60 years, you will be retired, right? आप क्या हो जाओगे? आप हो जाओगे retired. After retirement, if you will retire from the service, will you receive the salary? Answer me. Obviously no. You won't receive the salary because you have not worked, right? As you will not receive the salary, then how your economic activity will take place? Because your earning is zero now, so you won't be able to, earn something. You won't be having the economic benefit, right? So if you are not economically benefited, then don't you think so that you are going to face challenges? And definitely you will face the challenges, isn't it? So for that particular purpose, in order to make employee economically empowered even after the retirement, we have the two concepts. One is the concept of provident fund, another the concept of pension. All right. So there are two concepts related to it. One is provident fund, another one is pension. What is the pension? Pension is the amount that you will receive on a monthly basis. All right, that instead of salary, you will be getting the pension that you have worked, you have given your service to the government or to any particular company. There are various companies who also gives pension. Okay, so you have given service to that particular organization, to that particular groups, to that particular government, right? And after the retirement, you are receiving lump sum amount on a monthly basis. So that is what we call pension. What is provident fund? Provident fund is the total amount or in a amount in a bulk that you will receive soon after the retirement. The moment you will retire, you will get the provident fund in your bank account. That is the amount you have collected, you have earned. Okay. So this is a benefit that is provided by the government when you will retire. This is a kind of income, monetary income, monetary support you can say that is provided. So how this monetary support is being given? What happened? Suppose you have your 1 lakh rupees. 1 lakh is your salary, for example. So 1 lakh total gross salary है. So 12%. इसका 12% क्या करेगी? 1 lakh का जो 12% होगा, कितना होगा 1 lakh का 12%? बताओ. What will be the 12% of 1 lakh? Engineers, mathematician, 12,000, 12,000. Yes, 12,000 would be there. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हर महीने 12,000 rupees on a monthly basis. Government will give will subtract, will add 12,000 rupees. ठीक, 1 लाख रुपीस में से गवर्नमेंट 12,000 rupees, 12% गवर्नमेंट देगी. ठीक है, गवर्नमेंट आपके अकाउंट में सेव करेगी और आपके 1 लाख रुपीस में से 12,000 rupees कटेगा. ठीक, सो 12% गवर्नमेंट देगी, 12% आपके सैलरी में से कटेगा, यानी 24% जो इन टोटल आपका एक गवर्नमेंट अकाउंट में, जिसको हम बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड. ओके, ईपीएफ अकाउंट में आपका पैसा सेव हो जाया करेगा. 12% जिसमें गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगी, 12% आप डिपॉजिट करोगे, आपके सैलरी से कटेगा 1 लाख रुपीस से. 20% विल बी सेव्ड ऑन अ मंथली बेसिस. ठीक, एंड वंस यू विल रिटायर्ड, जब आप रिटायर कर जाओगे तो उसके बाद आपको वो सारे पैसे एक बार में दे दिए जाएंगे. दैट लो, दिस इज योर मनी दैट यू हैव अर्नड. 12% हमेशा गवर्नमेंट इंक्लूड करते जाएगी, 12% आपके सैलरी से कटते जाएगा. सो दैट यू विल हैव द इकोनॉमिक सिक्योरिटी. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द पीएस, दैट इज प्रोविडेंट फंड. इज दिस क्लियर, कांची? So as you said, we get at just one point, means after the retirement.
at a particular time, at a one point, we get all these provident funds. So we don't get pension. Definitely, you will get pension fund. also. No, you will get the pension also. Yeah, and this fund also. Yeah, pension. See, this fund you will get at one time, at a time only. Yeah. Suppose that you have accumulated 4 crore. Okay, for example. So the 4 crore rupees will be transferred, will be deposited in your SBI account. Suppose that you have the account in the SBI. So in your SBI account, 4 crore rupees will be deposited. But what is pension? Pension? Yeah, at a time. Okay, but what is pension? Pension is the monthly amount that you will get. Initially, once you were in the service, so you were receiving the salary, right? But after the retirement, you are not in the service, so you won't be getting the salary. So instead of salary, you will have the pension. Okay. So sir, this 12% is fixed? Yeah, definitely. From time to time, government changes this. Okay, there are changes. Yeah, there are changes that takes place. Okay, if the government will change that, no, from now onwards, government will give 15%. And you also have to deposit the 15% from your side. So that will change. Okay, so yeah, got it. Okay. Clear till now? Alright. And now see, there are also various technicalities, but those are not at all important. Like once you will attain the age of 50 years. Okay. So after attaining the age of 50 years, you will be eligible to withdraw 90% of your PF. So these are the little technical things that is not at all important. Even the PF is not at all important from your UPSC civil services point of view, but for understanding, you should be doing that. All right. So any other question? Sir, we should take loan from PF accounts also without any paying interest. See, if you are the government employee now, and if you are paying the tax, so so you already have the credibility because you are the government employee. So the bank will give you the loan just by showing your card. Bank would be happy to give you the loan because you are an IAS officer and you are having the credibility, right? So that is this. Is there any other question? और कोई क्वेश्चन है बताइए? नहीं है? Shall we start the planning? All right, चलो start करते हैं. आज हम अपन लोग खत्म करते हैं, ठीक है? अच्छा कांची, have you gone through the previous question? That is 2015 question. No sir, sorry. I will go through it today. Okay, you will go through it today. Actually, I just forgotten, but I will do it today. Okay, chalo, ठीक है. Tomorrow is Sunday, so those who have not completed their task must complete or finish their task by today or by tomorrow itself. All right. In the next class, I'll ask the question related to it. All right, chalo. So I hope till second 5-year plan everything is clear to you guys. Just answer me. Clear? All right. I hope you guys are clear that how and why China adopted and keep continuing with the agriculture sector, whereas India adopted the industrialization as a prime moving force. That is clear. Will you be able to write the answer? All right then. Now let's start with the third 5-year plan. Okay. So what was the target of the third 5-year plan? The target of third 5-year plan was 5.6%. That was the target. What was the actual growth that we received? Actual growth was 2.8%. Now just try to focus here. Okay, and pay your attention here at this particular data, at this particular figure. See, remembering this data is not at all important. Mugging up data is not at all important. गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है? रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के लिए, हाँ, if you will be giving exam for state PCS or any other chirkut sa exam, so for that particular purpose, these factual information should be important. But how far UPSC is concerned, so this is not at all important. तो रट्टा मारने मत बैठ जाना आप लोग, ठीक है? Now just have a look. So for UPSC ना, you have to be analytical. तो आपको analyze करना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए that why, even though the target growth was 5.6%, but why we were not able to achieve it? Why we were not in a position to achieve it? Right? So this is the thing that you need to understand. ये आपको समझने की जरूरत है. तो अब देखिए होता क्या है.
इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड कि हम अचीव क्यों नहीं कर पाए। सो इससे रिलेटेड आप जाओ टाइमलाइन पे। ये टाइमलाइन क्या है 1961 और 66 का। सो यू माइट हैव हर्ड अबाउट साइनो इंडिया वॉर, सुना है आपने साइनो इंडिया वॉर डेट इन 1962। साइनो इंडिया, इंडिया चाइना को बोलते हैं, ठीक। इंडिया चाइना को कभी भी इंडिया चाइना या चाइना इंडिया नहीं बोला जाता है। रीजन इज दैट इंडो चाइना इज अ रीजन जिसमें हमारे नेपाल, भूटान, म्यांमार ये सारे लोग आ जाते हैं। इफ यू विल मेंशन इंडो चाइना ना, ये चीजें आपको ज्योग्राफी में बताई जाएगी और इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी बताया जाएगा दैट ये सारी चीजें आएगी। ओके चलो पढ़े भी हो, चलो बहुत अच्छी बात है ना। इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो इसकी जब भी आपकी क्लास होगी यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक। चलो नाउ सी, यस निशांक यू वांट टू से समथिंग? चलो तो देखो, तो हमारा क्या हुआ था इन द ईयर 1962 देयर वाज अ वॉर, है ना। हमारी आजादी कब हुई? व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस? वी गॉट द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1964 47 में। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो इसलिए मान लेता हूं मैं, नहीं तो मैं नहीं मानता, ठीक है। तो हमारी आजादी हुई तुम लोग के अकॉर्डिंग 1947 में, ठीक। 1947 में आजाद हुआ हमारा देश और उसी टाइम पे पार्टीशन हो गया। देयर वाज अ पार्टीशन, रिमेंबर इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट सेपरेटेड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, है ना, एंड बांग्लादेश आल्सो। नाउ due to that particular partition there was a war also between India and Pakistan. Behind the curtain war, there was a war that was behind the curtain, especially related to the Jammu and Kashmir region, ठीक। Jammu and Kashmir region से related there was a behind the curtain, there was a war between India and Pakistan in the year 1947. तो हमारा जो देश था वो चलने की कोशिश कर रहा था, क्रॉल ही कर रहा था, दैट दे फेस द प्रॉब्लम अगेन इन द ईयर 1962 बाय चाइना। सो देयर वाज अ ग्रेट थ्रेट पोस्ड बाय चाइना इन द ईयर 1962। तो हमारा देश जो था पैदा हुआ, जन्म लिया, रेंगने की कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो गया, है ना, थोड़ा बहुत उठ करके चलने की कोशिश किया कि चाइना फिर से आ गया हमारे पास। तो इन द ईयर 1962 अगेन द चाइना केम इनटू पिक्चर एंड दे प्रोटेस्टेड, दे वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। और वॉर में तो पता ही है आप लोगों को कितना ज्यादा नुकसान होता है ना। तो 62 में वॉर हुआ, हम थके हारे से, हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम चीजों को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। या डेफिनेटली वी लॉस्ट द वॉर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। सो वी वर इन अ पोजीशन, वी वर सिंपली ट्राइंग टू रिकवर आवर स्ट्रेंथ, recover all those things, that in the year 1965 there was a war broke out between India and Pakistan in the year 1965, right? So again, just after the gap of 3 years there was a war between India and Pakistan again. So again there was an issue, again there was a challenge. So now just answer me one thing, you guys have made the plan, okay, you guys have prepared the plan that no, from Monday onwards, Monday को कौन सा डेट है, from 21st June, है ना, yoga day, on the day of yoga we are going to start our UPSC preparation on a serious note by starting our studying from 5 AM onwards। 5 बजे सुबह में जाकर के उठेंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद, योगा करने के बाद, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, है ना। 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक का आपने प्लान बना लिया बढ़िया सा। लेकिन तभी क्या होता है, दूर के कोई रिलेटिव आ जाते हैं आपके पास, आपके घर में, जो काफी एनोइंग हो, है ना, जिनसे आप काफी ज्यादा चिढ़ते हो। तो उसके बाद क्या होगा, उस चक्कर में क्या होगा, पूरा दिन बर्बाद, है ना। तो आप एक बात बताओ, विल यू बी एबल टू कंटिन्यू विथ योर प्लान दैट यू हैव मेड? क्या आपकी प्लानिंग में डेवलपमेंट हो पाएगी? No, absolutely no. The same thing occurred with Pakistan, occurred with India also. हमने भी third 5-year plan तो बना लिया. We were having the target. In the third 5-year plan, we decided to improve our agriculture sector. At the same time, we decided to strengthen our industrial sector.
So we were in a mood to strengthen both the things, agriculture sector also, industries also. So both the things was at the forefront. But hua kya? There was a back-to-back war. Back-to-back war erupted in the third 5-year plan. So because of that particular reason, we were not able to achieve the target that we set. है ना, जो टारगेट जो हमने सेट करके रखा था 5.6% का और 5.6% का, तो हम अचीव कितना कर पाए थे? There was a 2.8% target only that we achieved. Why? Because of this particular two prominent reason. क्योंकि war जब होती है तो war is the most and most devastating thing, है ना. During that time we faced the food crisis also. हमने फूड क्राइसिस भी उस टाइम पे फेस किया था. सो बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड क्राइसिस आवर लाल बहादुर शास्त्री, है ना, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, ही गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान. ऑलराइट, that was the slogan given by our then prime minister लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान. ठीक. So this was the situation, this was the scene during that particular time period. All right, so yahan tak clear hua. So this was the main reason. And India in the third 5-year plan, India actually faced the food shortage. अपने को बहुत ही ज्यादा food shortage हो गया था, बहुत ही पंगा हो गया था अपना, है ना. At the another front there was a drought also that was witnessed. सूखा, है ना, सूखा भी था अपने पास. अब देखो सारे प्रॉब्लम्स उसी टाइम पे थे. Now see, as there was a concern, as there was a challenge related to unforeseen, those were the unforeseen events that we never predicted. Who predicted that China will wage a war against India? Who predicted that Pakistan will wage a war against India soon after the 3 years, just after the 3 years? And you know what Pakistan said? पाकिस्तान ने 1962 में जैसे इंडिया हारा, पाकिस्तान ने बोला तुम हमें कश्मीर दे दो, है ना, नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे इंडिया को लेके जाएंगे, क्योंकि अभी अभी तो तुमने हारे हो, you have just lost a battle, है ना. और वो पता है क्या किया? पाकिस्तान हमारे वेस्टर्न साइड से एंट्री लिया. काफी इंटरेस्टिंग है. पाकिस्तान entered from the western side of India. You know what our Indian army did during that particular time period? Our Indian army encircled the Lahore, है ना. हमारे इंडियन आर्मी सिंपली एनसर्कल्ड द लाहौर, पूरा का पूरा लाहौर को घेर लिया. पाकिस्तान के तो एकदम पसीने छूट गए, है ना. पाकिस्तान चिल्लाने लग गया, पाकिस्तान सोचने लग गया कि ओ माय गुडनेस, व्हाट हैज हैपेंड. ऑलराइट, सो this is the thing, this was the scene that has occurred during that particular time period in the third 5-year plan. ऑलराइट, सबसे बड़ा सरेंडर भी उसी टाइम हुआ था ना सर, वर्ल्ड का दूसरा 1972. यस सर. So उस टाइम पे हमारा, तो this was the situation. तो ये क्लियर हुआ that what happened in the third 5-year plan and why India did not able to achieve her target. Is this clear to all? सबको, बाकी सबके हाथों में मेहंदी लगी है, क्लियर है? चलो फिर बहुत ही बढ़िया बात है. All right. Now see, as we were not able to recover from the losses from the the back-to-back war, they were not able to recover the things. Okay, so because of that particular reason, India come up with, there was a planned holiday. All right, as we were not able, so there was a planned holiday. What do you mean by planned holiday then? Then the question arises कि planned holiday का मतलब क्या होता है? Right, so planned holiday simply means, it simply talks about there is no 5-year plan, the absence of 5-year plan. Okay, absence of 5-year plan is called as planned holiday. All right, जहां पे हमारा 5-year plan नहीं रहता है. See, even though there is an absence of 5-year plan, that is planned holiday, but still without planning nothing can run, na? Nothing can function without planning. Remember this, you cannot qualify UPSC civil services examination without planning. All right, so even though there is a planned holiday, there is no 5-year plan as such, but there was annual plans, है ना. आपने
क्या लेकर के आया? There was annual plans just after the third 5-year plan. So UPSC may ask you the question related to it, that after which 5-year plan the annual plan came into picture. So you have to remember that after third 5-year plan, annual plans came into picture, right? Yes. Now what was in the annual plan? There was a 3 annual plans. Okay, after the third 5-year plan, there were 3 annual plans. That was from 1966 to 1967. 1967 to 1968 and 1968 to 1969. All right, so these were the 3 annual plans that we made. 1966 और 67 में हमने एक प्लान बनाया, 67 में 68 बनाया, 68 में 69 बनाया. Okay, why we followed that? Okay, so there were various the reasons that we have discussed above. Okay, at the same time there was a devaluation of rupee. Okay, devaluation of rupee मतलब क्या होता है? जब when you reduce the price of your, when you reduce the value of your currency, जब आप अपने currency के value को reduce कर देते हो, so that is what we call the devaluation of rupee. No, that was after Kanchi. After third 5-year plan there was annual plans. All right, your third 5-year plan was from 1961 to 66. So we completed the third 5-year plan, but as we were in a loss, as we were in a shock, so we were not able to recover from the back-to-back wars and the other challenges that we were facing. So after the third 5-year plan, there was plan holiday. Okay, but plan holiday for how many years? For 3 years. So in that particular 3 years, we made 3 annual plans. All right, so there were 3 annual plans. Clear? So this is the thing that was there. All right, Kanchi, is this clear to you? Okay, other thing, rest of the things are already mentioned in the PPT that you can go through it. आप already इसमें सारी चीजें available है, आप देख सकते हो. That was the time period of 66, na? So during that particular time period, your Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister. Okay. चलो, now फिर हमारी बारी आती है fourth 5-year plan की. Okay, and yes, one more thing, that your third 5-year plan, the third 5-year plan was based on Gadgil strategy. That also you need to remember. Okay, third 5-year plan किस पे based है? Third 5-year plan is based on Gadgil strategy. I think this is not mentioned in your notes, so just write it down. Okay, that the third 5-year plan was based on Gadgil strategy, where the focus was on developing both industries as well as the agriculture. So both the things were having the attention of the government, right? Now see, let's discuss about the fourth 5-year plan. Okay, so there was the situation arises in the 1969. After the annual plan, we were having the stable situation, so we come up with the concept of fourth 5-year plan under the leadership of whom? Under the leadership of Indira Gandhi. Okay, yeah, IG, the most strongest Prime Minister India ever had. Prime Minister Modi is also not the strongest Prime Minister to my mind. This is my personal opinion. Indira Gandhi was the most strong Prime Minister, right? And every woman, every lady has to be like her. Okay, so this is the thing. She was very much bold. She was very much courageous, very talented, very much intellectual. So she possessed all the qualities. That's why, Atal Bihari Vajpayee, our ex-Prime Minister, okay, he called her, Indira Gandhi, as a symbol of Durga, that she is the Durga of India, Ma Durga of India, right? So this is the thing, she was that much strong. I'll tell you the story in brief. Okay, so the fourth 5-year plan came into picture in 1969 and it ended in the year 1974, right? What was the actual target? Target was 5.7%. That was the target that was set, that our GDP target means what? GDP, कि हमारी GDP कितनी grow करनी चाहिए? तो our GDP should grow at the rate of 5.7%. What was the actual growth that we received
or achieved actual growth was 3.3%. It was not negative GDP actually. हाँ कह सकते हो negative GDP आप कह सकते हो. तो टारगेट ग्रोथ को पोटेंशियल जीडीपी कह सकते हैं क्या? टारगेट ग्रोथ को पोटेंशियल जीडीपी कह सकते हैं. पोटेंशियल जीडीपी कैसे आप कह सकते हो टारगेट ग्रोथ? सर पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या है? आप कितना ज्यादा अचीव कर सकते हो. इट्स अ टारगेटेड ग्रोथ ना. उस आप 5 घंटे तक पढ़ सकते हो, ये क्या है? ये आपका टारगेट है. क्या सिर्फ 5 घंटे तक ही आपके पास क्या सिर्फ 5 घंटे ही है पढ़ने को? उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते. पढ़ सकते हो ना, लेकिन आपने टारगेट कितने का सेट किया? 5 घंटे का. ठीक. सो दैट इज द थिंग रिलेटेड टू इट. ऑलराइट सर ये तो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ ना, क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान तो 2.8 ही ग्रोथ किया था, तो एक्चुअल तो उसका इतना ही तो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ ना. सी पॉजिटिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी. ओके, definitely in terms of nominal GDP, if you calculate it from the last year, definitely that is a kind of positive growth. All right, but from the base year, if you will say, so that will be a kind of negative growth because our first 5-year plan was having the success, है ना, उसमें ज़्यादा success हुआ था, right? So that is the thing. चलो, तो why? What was the reason? Why we were not able to receive the thing? Okay, why we were not? हाँ. सर जो 1 ईयर प्लान था उसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? 1 एनुअल प्लान्स को ना इंट्रोड्यूस करने की बात नहीं थी उस टाइम पे. गवर्नमेंट ने बस प्लान बनाया. देयर वाज नो प्लान एज सच, है ना. तो लेकिन 1 साल का हमने टारगेट फिक्स किया था कि 1 साल में हम क्या करने वाले हैं. तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट, आफ्टर दैट इट वाज लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री, राइट. तो ही कम अप विद दिस. 1951 में प्लानिंग कमीशन आ गई थी ना. हाँ 1951 में. तो फिर वो क्या कर रहे थे वो लोग? हाँ तो प्लानिंग कमीशन अपना प्लान बना रहे थे, काम कर रहे थे. क्या करेंगे बेचा. अब एक बात बताओ, कोविड-19 आ गया, क्या कर लिया नीति आयोग ने? इंडिया की जीडीपी तो कम हो गई ना. यस सर, है ना. तो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जब आते हैं तो कोई भी लीडर या फिर कोई भी लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव आप लोग, अच्छा एक बात बताओ, 26/11 अटैक हो गया, कोई आईपीएस ऑफिसर कुछ कर पाए? बाद में जाकर के कंट्रोल किया, अपनी शहादत दी, शहादत देनी पड़ी. कितने सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की डेथ हो गई. राइट. सो दिस इज द थिंग. कोई कुछ नहीं कर पाता. अनप्रेसिडेंटेड. जब आप लोग आईएएस बनोगे, है ना, यू विल आल्सो फेस द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस. What you will do? You will do nothing but to protect the people. So you can simply try to protect the people. Everything is not in your hand. All right. yes. Chalo. So in the 4th 5-year, yes, Kanchi. Yes, Kanchi. Am I audible? Yeah, you are audible. So I mean, basically, why the government plans for that 3 annual plans? Holidays. See, because during that time we were not having the resources, we were not having the enough thing to feed the starving stomach of India. We were having the various challenges that emerged due to the war. Okay, the economy was crumbling, so everything was at the stake. So if everything is at the stake, if you are not able to walk on your feet, so will you be able to run the country? That won't be possible, right? Will you be able to make the plan that will be for the 5 long year? What you will do? You will simply focus on the immediate thing, na? If you are facing any particular crisis, so you will focus on what? Immediate resolution of that particular crisis, or focusing on the target that will come after 1 year or 2 years. So basically, the planning commission gave the pause to that 5-year thing. Sorry. So basically, the planning commission at that time gave the pause between 1966 and 1969 to this 5-year plan. See, just try to understand. All the plans are formulated by the 5-year plan, but who approves all those things? That is the government. No, it was the NDC, National Development Council. It was the government who used to approve all those things, and that was actually in the direct command of the Prime Minister. So it was the Prime Minister who used to approve it. मतलब जो planning commission था at that time, वो that was able to go for that 5-year plan, right? See, it was not about the ability to go for the 5-year plan. It is about the situation. Okay, if the situation is tough. Sorry. According to the circumstances at that time,
planning commission thought that 1 year plan would be more beneficial. Definitely, because you have to target the immediate problems that has arisen due to the war. So planning commission took small targets at one time. Definitely, the planning commission thought that it's better. Actually, the government. You cannot say the planning commission thought. It's the government who thought that, right? So it's the government who thought that no, because for everything you have to put the government. All right, government institution or the organization should not be taken into account. All right, so it's the government who realized and who thought that instead of making a bigger steps, let's take a baby step. All right, so because planning. Okay, sorry, sir, pardon. Yeah, so the baby step was taken by the government in order to resolve the crisis. Okay, so means both planning commission and the government discussed for that situation. Then they decided for 3 annual plans. See, remember this particular thing, Kanji. Everything that is being done by the government only. Planning commission was what? Niti Ayush is what? That they are the agents of the government now. So whatever I am saying here, it is not the Ayush who is saying, it is the Plutus IAS who is making the statement, because I am representing the Plutus IAS. Isn't it? So that is the thing. Whatever thing that planning commission will do, the planning commission also represents the government. Right? So it's not the planning commission who did, it's the government who did all those things. So that is the better thing to understand, and this is how you need to make the statement. All right, Kanji? Clear? Chalo. All right. So why? So it was because of the war. आपको इंडो वॉर के बारे में पता है? 72 में क्या हुआ था? Do you remember? नहीं पता. चलो थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे देता हूं आप लोगों को इसका. हुआ क्या था कि उस टाइम पे ये था हमारा इंडिया. ठीक. This was our India. This side we were having Pakistan, and this side we were having Bangladesh. ठीक. इस साइड पे हमारा पाकिस्तान था, एक साइड पे हमारा क्या था? बांग्लादेश था. अब देखो होता क्या था उस टाइम पे. Pakistan, what Pakistan used to do? Pakistan simply used to suppress the Bangladeshi people. Okay, इनका बहुत ज्यादा suppression होता था, हद से ज्यादा suppression होता था. So because of the political crisis that emerged in Bangladesh, okay, so इसकी वजह से क्या होता था? लोग इंडिया में आने लग गए थे. People started migrating in India. अब एक बात बताओ, अगर लोग इंडिया में आने लग जाएंगे, so that means what? Indian resources would be shared with the refugees who will be coming to India. हमारे जो resources हैं, हमारे resources का क्या हो जाएगा? शेयरिंग हो जाएगी ना. लोग हमारे resources को शेयर करने लग जाएंगे. Isn't it? So that was the thing that was done. ये पर्टिकुलर चीजें हुई थी इस टाइम पे, रिसोर्स की शेयरिंग होने लग गई. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला, पहले पाकिस्तान को समझाया, पाकिस्तान नहीं समझा. उस टाइम पे पाकिस्तान और यूएस की बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी. देयर वाज अ गुड फ्रेंडशिप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड पाकिस्तान. ऑलराइट, सो इंडिया सिंपली अप्रोच द यूएस एंड सेज दैट यू जस्ट मेक पाकिस्तान अंडरस्टैंड दैट इट्स बेटर टू स्टॉप doing political crime in Bangladesh. All right, so because the migrants, they are coming to India and they are taking away our resources, and we cannot let that happen, isn't it? Because we are a country with sensitivity. So if anyone is coming to India, we believe in the concept of Vasudev Kutumbakam. So if anyone is coming to India, so that means what? That they are sharing our resources, they are taking away our resources, है ना? तो इसके बाद क्या हुआ था? अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग, इसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान माना नहीं, यूएस ने भी कुछ नहीं किया. यूएस ने बोला कि चलो ठीक है, देख लेंगे, पाकिस्तान तुमको जो मर्जी आए करो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इंडिया को तो हम देख लेंगे, आई एम वेरी मच पावरफुल. पाकिस्तान ने फिर क्या किया? इंडिया पे अटैक कर दिया, है ना. इंडिया फिर छोड़ने वाली नहीं थी. इंडिया ने फिर क्या किया? पाकिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर दिया. चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर करके बहुत बुरे तरीके से पिटाई करी. ठीक. यूएस को ये बात पता चला दैट अरे पाकिस्तान तो हमारा फंस गया, आवर बेस्ट फ्रेंड इज इन ट्रबल नाउ. यूएस ने क्या किया? यूएस की एक बहुत बड़ा शिप था, अब्राहम लिंकन. ठीक है, अब्राहम लिंकन करके यूएस का एक वॉरशिप था, और इसके सामने था हमारा आईएनएस विराट.
सर वॉरशिप का एक ग्रुप था ना, 5 शिप्स चलते थे एक साथ, 5वां बेड़ा जिसको बोलते थे। हाँ 5 वो वही था इनका, जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। ठीक है, सो इसमें क्या था, और उसके सामने था हमारा INS विराट। ठीक, तो ये इंडियन ओशियन में यूएस ने अपने शिप को भेज दिया, वॉरशिप को भेज दिया इंडियन ओशियन में, और उसके सामने ये था यूएस का शिप और ये था हमारा इंडिया का शिप, इस तरीके से खड़ा था आमने सामने। ठीक, प्लस यूएस यहीं पे नहीं रुका, यूएस ने क्या बोला, दूसरे कंट्रीज को जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इन सारे कंट्रीज, ब्रिटेन यूएस के दोस्त थे, इन सारे कंट्रीज को बोला कि जाओ और जाकर के इंडिया पे अटैक करो। तो इन सारे कंट्रीज के जो भी शिप थे ये सब इंडिया पे आने लगे अटैक करने। बट हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन, हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर BFF इज नथिंग, इज नन अदर देन रशिया। ठीक, इज नन अदर देन रशिया। हमें सपोर्ट किया। रशिया ने पता है क्या किया, रशिया ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सारे कंट्री, जो कंट्री को यूएस ने बोला कि जाओ इंडिया पे अटैक करो, उन सारे कंट्रीज के बॉर्डर पे रशिया ने अपने शिप लगा दिया। रशिया इज वेरी मच पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। रशिया ने इन सारे कंट्रीज के बॉर्डर पे शिप लगा दिया, बोला कि तुम जाओ इंडिया पे अटैक करने, हम तुम्हारे कंट्री को यहाँ पे बर्बाद कर देंगे। ठीक है, पूरा धुआं कर देंगे तुम्हारे देश को। छोटू सा तो हो ही, है ना, मिट्टी में मिल जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो ये बेचारे ये सब लोग थर थर कांपने लग गए, बोले नहीं नहीं रशिया आ गया है तो हम वापस जाएंगे, यूएस हमें मदद नहीं करेगा रशिया के सामने। और पता है फिर ये था यूएस का शिप, रशिया ने क्या किया, अपने सबमरीन्स को भेज दिया, और रशियन सबमरीन ने जो यूएस का जो शिप था उसे चारों तरफ से घेर दिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ रशिया एक्चुअली हेल्प्ड इंडिया इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर रशिया हमारे मदद को नहीं आता, इंडिया वॉर तो हारता ही, फिर से एक कॉलोनी हो जाती यूएस की। ठीक है, इफ रशिया वुड नॉट हैव अराइव्ड फॉर आवर हेल्प। सो व्हेनेवर यू विल बिकम द डिप्लोमैट, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द इंडियन पॉलिसी। आपको पढ़ाई भी जाएगी। आई थिंक आप लोग में से कोई हो ना हु वांट्स टू बी द IFS ऑफिसर? इज देयर एनीवन? Is there anyone who wants to be an IFS officer? निशांत, आप तो बोलो ही मत, आप तो चाहते नहीं हो, आप तो IAS चाहते हो। सर गाजी का आपकी आवाज इंस्टॉलमेंट में आ रही है उज्जवल। सर PNS गाजी के बारे में तो थोड़ा सा स्किप कर दिया ना आपने। अरे तो आप कितना बता, ये इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास थोड़ी ना चल रही है, ये इकोनॉमी की क्लास है, थोड़ा सा स्टार्ट करके बता दिया। तो अब क्या चाहते हो, पूरा डिटेल में दे दूं? नहीं दे सकता ना, IR की क्लास में वो सब पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो ये दिस वाज द थिंग related to it. All right, so why we were not able to achieve the target, our target? It was simply because there was again a war. Another thing, another challenge was that there was a drought that we witnessed during that particular time period. So if the drought is, just imagine that India is a country where maximum population are dependent on the agriculture sector, and agriculture is the prime economic activity that takes place in the country. So for agriculture activity or for agricultural economy to be a successful one, you need to have the monsoon, because you need water, no? And if the drought would come, so will you be able to successfully launch your economic activity? No, that won't be possible, because there is a drought, right? So drought was also there. So there were the twin factors that actually hindered India's growth in the fourth five-year plan, and those twin factors were, one was the Indo-Pak war, and the another one was the drought that we faced during that particular time period, right? So these were the two main reasons because of which we face the challenge in this particular time period. Okay, even though the target was to develop the agriculture sector in a proper way, in a proper manner, drought and Indo-Pak war. All right, Kanchi? So these were the two important factors. All right, because of which we were not able to achieve the target that we set for fourth five-year plan. After the fourth five-year plan, we were having the fifth five-year plan from 1974 to 1979. And this fifth five-year plan is very much interesting. Yes, Vidya. So I have a doubt. Then what was the improvement that was taken during the annual plans? There were 3 annual plans, right? Yes. After the third year plan. So what was the improvement during that? We didn't have any target during that time?
No, we were having the target. Yeah, definitely. Also, we were having the target. Under that particular thing, we always remember that we always, after the second 5-year plan, we focused on both the things. That was the development of agriculture as well as the development of industry. So we took a baby step. Okay, in those particular respect, in developing the agriculture as well as in developing the industries. All right, there were few reforms that were taking place that we will discuss in the industry reforms. Okay, so that is it. All right, Vidya. उस time period में who was the prime minister? It was the Indira Gandhi who was the prime minister during that time period. All right, so it is quite obvious that Indira Gandhi would introduce that particular thing. All right, Ujjwal. Chalo. So fifth 5-year plan is very important also and very interesting also. बहुत important भी है और बहुत ज़्यादा interesting भी है आपका fifth 5-year plan. Okay, what is in the fifth 5-year plan then? Now see, आपका target क्या है? What is the target of fifth 5-year plan? The target was 4.4%. What was the actual growth that we did? That was 4.8%. Okay, 4.8% was the actual growth. It means it shows what? That we actually did well in our fifth 5-year plan. हमने बहुत अच्छा काम किया था fifth 5-year plan में, है कि नहीं? So that was the thing. तो अब देखो, what was the main thing? Okay, the main thing of the fifth 5-year plan was गरीबी हटाओ. That was the slogan given by Indira Gandhi. Indira Gandhi gave the slogan गरीबी हटाओ, है ना? तो गरीबी हटाओ मतलब क्या? Removal of poverty. That was the main slogan. So from the fifth 5-year plan, the main focus of the fifth 5-year plan was the removal of poverty. Okay, so that was the thing. So there were many problems that was there in the fifth 5-year plan. Despite having the problems, despite having the challenges, we not only achieved the target, but we did well in terms of economy. What was the target? What was the problems? What were the challenges that we faced during the fifth 5-year plan? So the challenges were like inflation. Inflation was there. There was high inflation during the fifth 5-year plan. And as there was the high inflation during that particular fifth 5-year plan, so from that particular time period, RBI came into picture. Government ने क्या बोला? RBI को फिर government लेकर क्या किया? Just a minute, Nishan. Let me complete. Okay, government simply brought the RBI. और government ने बोला कि भाई साहब RBI अब तुम आओ. Now it is also your responsibility to control the inflation. Okay, so RBI started controlling the inflation from fifth 5-year plan. ये याद रहेगा? बताइए. चलो, यस निशान, बताइए क्या है आपका डाउट? सर हम ये भी कह सकते हैं कि थर्ड 5-year plan में जय जवान जय किसान वाला स्लोगन दिया गया था. थर्ड 5-year plan में? हाँ, तो मैंने आपको बताया ही. नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहा तो थर्ड 5-year plan में ही लिखना है ना? हाँ, ऑब्वियसली उसी टाइम में जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया गया था. हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था. ठीक है सर. चलिए. Okay, so inflation was high. Also one thing, there was corruption also. Corruption was also high during that particular time. There was a nexus between politician, bureaucrat, and the businessman. Not the businessman, but the anti-social element that you can say, gunda log thoda. Okay, so the nexus of these politics, bureaucracy, and the some influential person you can say. So the nexus started during that time period also. Okay, this was the time period when the nationalization of bank was also introduced. What is nationalization of bank? Be patient. We will be discussing all those things while discussing the banking sector. Okay, abhi bas sun lo that there was nationalization of bank that was done. All right, so that was also introduced. That was also done in the fifth 5-year plan. हाँ, डेफिनेटली 1969 में वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था. इसका मतलब क्या, वो 1974 में जाकर के नहीं हुआ था. दैट वाज द फ्यू बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. ओके, इन द फिफ्थ 5-year plan आफ्टर 1974 मेजर बैंक्स वर आल्सो नेशनलाइज्ड. बहुत सारे बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी, है ना? सो दिस वाज द थिंग. नाउ सी, तो ये हो गया हमारा. दिस वाज द मेन थिंग. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव? गरीबी हटाओ. व्हाट वाज द अनदर ऑब्जेक्टिव? टू मेक इंडिया अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी. इंडिया को क्या बनाना है? एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनानी है. ठीक. सो दैट वाज द थिंग
that was introduced in the 5th 5-year plan. लेकिन देखो इसमें क्या होता है, इसमें in the 5th 5-year plan there was emergency also. हमारा क्या हुआ, इमरजेंसी भी आया, याद है आप लोग को, नेशनल इमरजेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग, है ना। तो 5th 5-year plan का हमारा टारगेट क्या था, 1974 टू 19 कितना था, 1974 टू 1979, ठीक, 74 से 79 तक का हमारे पास टारगेट था ऑफ द 5th 5-year plan. बट व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1978, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई इमरजेंसी के बाद, soon after the emergency, because in the 5th 5-year plan emergency came into picture. So after emergency इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और किसकी सरकार आई, मोरारजी देसाई की. मोरारजी देसाई became the Prime Minister of India. Okay, so when the Morarji Desai became the Prime Minister of India, what he did, he actually scrapped the 5th 5-year plan formulated by Indira Gandhi. Indira Gandhi जी ने जो 5th 5-year plan formulate किया था, Morarji Desai ने क्या किया, उसको scrap कर दिया. He simply scrapped the 5th 5-year plan formulated by him. Okay, and he come up with his own 5-year plan that was from 1978. Just a minute, Kanchi. That was from 1978 to 1983. That was the 5-year plan formulated by him. Yes, Kanchi. बताइए. So actually, I read somewhere that nationalization of banks was started in 4th 5-year plan. I think that was in the year 1969. All right. Okay, so I think it was 4th 5-year plan started in 1969. Yes. Definitely, in the 4th 5-year plan, nationalization of bank was there, but there was not only one time that was nationalization of bank was done. Yes. Okay, it nationalization has been, yes, it continued in the 5th 5-year plan also. But if in prelims, the question will come that when nationalization of banks started. That is 1969. Yes. Means end of 4th 5-year plan. Yes, after in the 4th 5-year plan actually. Okay. All right. Green Revolution also started in India. Green Revolution, White Revolution, all those things. Okay. Yeah. All right. Chalo. Yeah. Now see. So what happened that Morarji Desai, when Morarji Desai became the Prime Minister of country in the year 1978, he scrapped the 5-year plan formulated by the Indira Gandhi government and he come up with his own 5-year plan. ठीक, वो क्या किया, अपना खुद का 5-year plan लेकर के आए 1978 to 1983 तक. यहां तक क्लियर है? Is this clear till now? All right. देखो, लेकिन फिर क्या होता है, 1980 में फिर होता है एक बहुत बड़ा धमाका. धमाका क्या, मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है ना. मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टरशिप से हट जाते हैं, फिर कौन आ जाता है पावर में, अगेन इंदिरा गांधी अज्यूम द पावर. ओके, फिर से who became the prime minister? It was Indira Gandhi who became the prime minister. तो इंदिरा गांधी ने आते ही क्या बोला, हम पर तुम पर खुदा. बेटा जब तुम आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तुमने मेरा 5-year plan स्क्रैप किया, मेरा 5-year plan बना करके तुमने अपना 5-year plan बनाया. ओके, तो एक काम करो, हम तुम्हारा 5-year plan स्क्रैप करते हैं. So when Indira Gandhi resumed the power, Indira Gandhi simply scrapped the 5-year plan formulated by Morarji Desai government. But जब इंदिरा गांधी आई थी पावर में, तब तक मोरारजी देसाई अपना 2 साल तो कंप्लीट कर चुके थे अपने प्लान का, है ना. सो द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द मोरारजी देसाई 5-year plan ही लेकर के आए थे, लेकिन वो तो 2 साल तक ही कर पाए थे, है ना. इंदिरा गांधी ने बोला कि चलो आपने जो 5-year plan फॉर्मुलेट किया उसे हम 5th 5-year plan में मिक्स कर देते, दैट विल रिमेन द पार्ट ऑफ 5th 5-year plan. ठीक, बट एज there was a change in the government and Morarji Desai come up with the new plan, so the 2 years plan of Morarji Desai came to known as rolling plan. तो Morarji Desai जो 5-year plan, जो Morarji Desai जो plan लेकर के आए, जो सिर्फ 2 साल तक चला, उसे क्या बोला जाने लग गया, that was called as rolling plan. Is this clear? ये क्लियर हुआ? Rolling plan क्या था? Rolling plan was the plan introduced by Morarji Desai, in which again the focus was same. सारे 5-year plan में सेम ही फोकस रहेगा. अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना है, गरीबी को हटाना है, देश को डेवलप करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है. Everywhere in all the 5-year plans, the solution would remain the same. ठीक, the things will remain the same.
Is this clear till now? Chalo then. After 4th 5-year plan, after 5th 5-year plan, there were the 6th 5-year plan. फिर हमारा क्या आया? 6th 5-year plan आया from the year 1980 to 1985. In this particular 5-year plan, we faced the Sikh right. ठीक? अब हमने क्या फेस किया था? Sikh right फेस किया था. Why? Due to the assassination of Indira Gandhi. Indira Gandhi का क्या हुआ था? Indira Gandhi was assassinated. So soon after the assassination of Indira Gandhi, then Prime Minister, all right, Honorable Prime Minister, all right. So she was assassinated because of few reasons that you will read in the internal security section, है ना? She was assassinated. After her assassination, Rajiv Gandhi became the Prime Minister, है ना? Rajiv Gandhi Prime Minister बन गए थे. During his 10 years, during his prime ministership, there was the Sikh right. Okay, and 6th 5-year plan was also came into picture during that particular time frame. And actually, Indira Gandhi introduced the 6th 5-year plan, but it continued under the prime ministership of Rajiv Gandhi. है ना? Rajiv Gandhi के prime ministership में भी चला. Again, the 6th 5-year plan was also very much popular. Okay, again, if there was a talk related to the poverty, alleviation of poverty. Okay, there was a talk related to development of employment to make India self-reliant. Okay, that was the thing of the 6th 5-year plan. Then we had the 7th 5-year plan. उसके बाद हमारा क्या आता है? 7th 5-year plan आता है ना? बाकी और कुछ चीज है नहीं, उतना कुछ खास अब है नहीं 5-year plans में. Okay, फिर आता है 7th 5-year plan. 7th 5-year plan came under the leadership of Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi was the prime minister during that time period. Okay, so target was, what was the target? Target was 5% to make India grow at the 5%. What was the actual target that we achieved? Actual target that we achieved was 6%. So 6% was the thing that we achieved. So it was more. So it was high. Why we were in a position to achieve more than the set target? It was because of the higher agricultural growth. है ना? उस टाइम पे हमारी जो उस टाइम पीरियड में हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी. सो बिकॉज ऑफ आवर हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ वी वर इन अ पोजीशन टू अचीव द गुड जीडीपी. हमारी जीडीपी अच्छी हो गई थी. ओके, सो दैट पर्टिकुलर प्लान वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमी, है ना? हमारे इकोनॉमी के टर्म्स में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहा था. Okay, why? Mainly because of the agriculture sector, क्योंकि grains हमारा बहुत अच्छे से फसल हुआ था. All right, so this is about the 7th 5-year plan. Another, after the 7th 5-year plan, there was 8th 5-year plan. ठीक? Now see, prior to 8th 5-year plan, कुछ incident हुए. Okay, there were another incident. After the 7th 5-year plan, there was the economic crisis that we faced. हमारे देश ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस किया जिसका नाम था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. ओके, आफ्टर 7th 5-year plan we faced the BOP crisis, that is balance of payment crisis. What is balance of payment crisis? It simply talks about that we were not having enough money to import the commodity. हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का 15 days का पैसा बचा हुआ था इंपोर्ट करने के लिए. ठीक, we were having only 15 days money left in order to purchase any particular commodity. अब सोच करके देखो, आपके पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा रहेगा, कितनी दिक्कत वाली बात हो जाएगी. So as we were facing, और इसके लिए टेंशन मत लो, ये BOP क्राइसिस जो है ये अलग टॉपिक है जिसका नाम है LPG रिफॉर्म एक्सटर्नल सेक्टर. वहां पे मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपको डिटेल में करवाऊंगा, यहाँ पे बस नाम सुन लो. ठीक है? So we faced the economic crisis, that is the balance of payment crisis in the year 1990. Okay, because of which we were not in a position to make the plan. So again there was plan holiday. फिर से क्या हुआ? फिर से हुआ plan holiday, and there were again annual plans came into picture, that is 1990 to 1991, and then 1991 to 1992. So those annual plans again came into picture after the 7th 5-year plan. Is this clear? Why? Because of the economic crisis that we faced. And what was the economic crisis? That was balance of payment crisis, in which we were not having enough resources to
import the products. We were having money left only for the 15 days. Is this clear till now? बताइए जरा. All right, great. So after the 7th 5-year plan, we come up with the concept of 8th 5-year plan. 8th 5-year plan came under the leadership of Narasimha Rao. He was the Prime Minister during that time. Narasimha Rao. Okay. So this 8th 5-year plan is also called as Rao-Manmohan model. Okay. इसको हम Rao-Manmohan model भी बोलते हैं. What was the extra thing that we did? आप बताओ मुझे क्या आया था, कौन से टाइप की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी? मैं आपको बता चुका हूं पहले. Which type of planning is started from 8th 5-year plan? Just answer me. बताइए कौन से टाइप की प्लानिंग हुई थी स्टार्ट? इट वाज द इंडिकेटिव प्लानिंग. भूल गए? याद आया कुछ? इट वाज द इंडिकेटिव प्लानिंग. याद आया? राव मनमोहन मॉडल के टाइम पे इट वाज, हमारी इकोनॉमी बेकार हुई थी, उसके बाद वी लिबरलाइज्ड आवर इकोनॉमी. व्हाट वाज इन द इंडिकेटिव प्लानिंग? क्या था इंडिकेटिव प्लानिंग में? प्राइवेट सेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो अलोकेट करेगी. Definitely, private sector would distribute the things. Yeah, so there was a kind of mixed economic model, है ना? आप ये भी कह सकते हो ये क्या था? Mixed economic model. That was come up. ठीक. So from 8th 5-year plan under the Rao-Manmohan model, we come up with the concept of mixed economic model, where indicative planning has started. We started liberalizing our economy. So इसी को 8th 5-year plan से ही हमारा क्या आया था? LPG reform, है ना? That is liberalization, privatization and globalization reform came into picture from 8th 5-year plan. Alright? तो एक काम करते हैं, अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हमारे पास कुछ और प्लान्स बच गए हैं to discuss. So in our next class we will discuss the remaining plan. At the same time, if time permits, we will start with the inflation, है ना? Inflation के साथ हम start कर देंगे next class से. Because I am in no hurry, मैं बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं हूँ. So I'll discuss all those things. So in the next class we will complete with our 5-year plan. All right, and if time permits, we will start with our inflation chapter. All right, so that's all for today. So it's done for today. Thank you so much, guys. Next week probably we will meet and we will discuss about all those things. All right, till then, take extreme care of yourself. Stay safe, stay healthy, और पढ़ाई लिखाई तरीके से करते रहो. Yes, Kanchi? So you can give one question on this planning. Definitely. Let me complete. Okay. Let me complete the 5-year plan. Then I'll give you the question. Okay, next week. Yeah. Yes, Anshika. Yes, Anshika. You have to send the question again. Answer again. All right. Chalo then. Done for today, guys. Thank you so much. See you in the next class. Stay safe.